ब्रेनली सब पे डाल के भी देखा, विदाउट नेट पे डाल के देखा, सब जगह वो क्वाड्रेटिक पे ही बता रहे थे। बता रहा हूँ। शीट, चलो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा देता हूँ। One to two question. A question can be direct and question can be in combination with percentages or SICI. ठीक है. See, first percentage fraction will again play a very important role here. Should know. I'm not writing it again. First is, how will you define profit? Profit is always selling price minus cost price. I mean, selling price has to be greater than cost price. And what is loss? Cost price minus selling price. Simple cost price is greater than selling price, right? Cost price is the price at which we purchase the article. Selling price at which sell the article. Profit percentage is profit over cost price into 100 with a sign of percentage. That means if I have to find out how much is the profit percentage, so I will first calculate the profit, and since profit is always calculated on cost price, you buy something in 100, selling it in 120, you're making a profit of 20 rupees. 20 rupees on what? 100 rupees. Same way, loss percentage will be defined as loss over cost price. Remember, profit or loss percentage will always be calculated on cost price. Solve LR. Profit or loss percentage is always calculated on cost price, unless stated otherwise. If they say that 20% profit on selling price, if I mention this statement, 20% profit on selling price, you can write this in percentage fraction. You can write this as 1/5. That means this 5 is now your selling price, and this is profit. So selling price minus profit will give you cost price. So cost price will be 4, right? Right. Now, if I say there is a profit percentage of 20%, 20% profit means 1/5. That means 1 rupees on 5 rupees. So 5 rupees is your cost price. So I can use percentage fraction to solve the questions of profit and loss. You can use percentage fraction to solve the questions of profit and loss anytime. Clear? This one is clear? इसमें कंसेप्ट आता है, दैट कंसेप्ट इज ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. वो है क्या? पहले क्वेश्चन करते हैं. Let's say it is given that selling price of 12 articles is equal to cost price of 15 articles. What is given? Cost price of 12 article is equal to selling price of 15 article. So is there any profit, loss or no profit, no loss? स्कूल में जाओगे 8th स्टैंडर्ड की क्लास पे, तो टीचर कहती है कि इन सब दोनों इक्वल है, तो इसको ले लो LCM of 15 and 12, which is equal to 180, right? And then he tells you that selling price of 12 is equal to 180 and cost price of 15 is also what? 180. So what is selling price of one article? 180 by 12, and cost price of one article 180 by 15. So this is 12 and this is 15. So you buy something in 12 rupees, selling it at 15 rupees. Profit of 3 rupees over cost price, 3 by 12. 3 by 12 is
1/4 and 1/4 is equal to 25%। इसको अभी ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये तो ठीक है। बस एक चीज याद रखो, राइट, ये 180 भी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली राइट दिस एज SP into 12 is equal to CP into 15, right? Just find out SP by CP. SP by CP is equal to what? 15 by 12. You can write it like this. This is 3 4s are 12 and 3 5s are 15. Can we write it like this? And then just compare the ratio. If cost price is 4, selling price is how much? 5. They are saying if cost price is 4, selling price is 5. So there is a profit of 1 rupees. Profit percentage, 1 profit on what? 4. So 1/4 is what? 25%. Actually, after this, you can do mental calculation to get the answers, right? That percentage fraction. Clear? So whenever we have this type of question, go and solve it like this. Clear? Recording this, I'll send the recording. Is this clear to all of you, this part? Okay. इसमें एक कंसेप्ट आता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। So what is multiplying factor? Multiplying factor is a number which when multiplied with cost price to directly give you selling price, right? Multiplied with cost price to gives you selling price. For example, if there is some article which is of 150 rupees and you sell this article by making a profit of, let's say, 30%, right? You want to sell this by making a profit of what? 30%. This is your cost price. So how you normally find out cost selling price? First you find out 30% of 150, which is 45 rupees. And then you add 45 rupees in the cost price, which is 150. It will give you 195, which is selling price. This is how you find out selling price or not, right? This is how you find selling price or not. You find 30% of cost price, add to it, give you selling price. But if you know the multiplying factor value of 30%, then you can directly get the answer. So what is the multiplying value of 30%? It is 1.3. In simple terms, if I multiply cost price with multiplying factor, it gives selling price. Now cost price is 150. If I multiplied with 1.3, it directly gives you selling price. 1.3 is 13 by 10 multiplied with 150. 0, 0 cancel. 15 13s are 95. Gives you selling price. So how we got that 1.3? 1.3 can also be written as 13 by 10. Can also be written as 13 by 10. So if a number goes by 5%, then multiplying factor is 1.05. Number goes by 10%, multiplying factor is 1.1. Goes up by 15%, 1.15. Goes up by 20%, multiplying factor is 1.2. Goes up by 25%, multiplying factor is 1.25. Let's say 40%, 1.4. Some number goes up by 50%, 1.5. Number goes up by 75%, so it is 1.75. And number goes up by 100%, multiplying factor is 2. So how to obtain multiplying factor? There is a formula, right? And apart from percentage fraction, this formula can also be used. नहीं याद रख लो तो भी चलेगा, right? Some number goes up by, let's say, 200%.
3. So formula to find out multiplying factor is 100 plus P upon 100, where P is percentage increase. So if something increases by 50%, so 100 plus 50 by 100. So 150 by 100 is 1.5. Increases by 200%, so 100 plus 200 by 100. So 300 by 100, which is 3. Similarly, if some value decreases by 5%, multiplying factor is 0.95. Some value decreases by 10%, 0.9. Value decreases by 15%, so it is 0.85. Decreases by 20%, multiplying factor is 0.8. 25%, 0.75. Decreases by 40%, 0.6. 50%, 0.5, and decreases by 7500, 0. Here, multiplying factor will be 100 minus P by 100. So this is the formula you have to use when some value decreases. But whenever we have that 33.33, 37.5, don't use this formula. I mean, you can use it, but then percentage fraction comes very handy in those cases. कोई याद रखो, percentage fraction. Right? Understood? Any doubt in this? Anyone? Clear? Okay. SP0 हो जाएगा ना, कोई भी वैल्यू 100% से कम हो मतलब 0 हो गया. कहते ना कार का वैल्यू डिप्रिशिएट होके 0 हो गया, तो कूड़े में भी नहीं ले रहा उसका. वैसे किसी का वैल्यू डिप्रिशिएट 100% नहीं होता है, थोड़ा तो उसका कुछ ना कुछ तो रहेगा, उसकी खून का एक बूंद तो रहेगा, उसका ही पैसा है. किसी का वैल्यू एक्चुअली तो नेगेटिव में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन वैल्यू कैन इंक्रीज बाय 200-300%. राइट. अब दो टाइप के क्वेश्चंस है. खैर दीज क्वेश्चंस वोंट कम इन एग्जाम, मतलब इतने सिंपल नहीं आएंगे, पैटर्न आ सकता है. लेट्स से देयर आर टू आर्टिकल्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स आर सेम. राइट. Let's say K and K. The first you sell by making a profit of, let's say, X%, and second you sell by making a loss of X%. That means you purchase two articles and cost price of both articles is same. The first you sell by making a profit of X% and second you sell by making a loss of X%. So in the overall transaction, will there be a profit loss or no profit no loss? In the overall transaction, will there be a profit loss or no profit no loss? No profit no loss. Understand this example. Let's say cost price of first article is 100 and cost price of second article is also 100, right? On one you make a profit of, let's say, 10%, and second you make a loss of 10%, right? So what is the selling price in first case? 110, right? And what is the selling price in second case? 90. How much you invested? How much you received? 200. So when cost price is same and profit and loss percentage value is same, then in the overall transaction there will be no profit, no loss. But if selling price of two articles is same, right? If selling price of two articles are same, selling price of किसमें? उसमें तो नो प्रॉफिट नो लॉस है. इसमें बताओ.
in the overall transaction, will there be a profit loss or no profit, no loss? Okay, let me give you the amount. Let's take a case. Right. Let's say selling price of first article is 150. Second article is also 150. 25% loss percentage is 25%. Will there be a profit loss or no profit, no loss? No profit, no loss. Okay, let's see. What is the cost price? Remember, I told you cost price into multiplying factor gives you what? Selling price. What is cost price? Selling price upon multiplying factor. Selling price is what? 150 upon multiplying factor is what? 1.25. Move decimal. How much? 25 5s are 6005 120. So what is the cost price of what article? 120. In this case, what is your cost price upon 200, right? So what is the cost price of second article? How much you invested? How much you invested? Invested 320. How much you received? Make a profit or loss? अब इसको 100, 200, 50, 70 कुछ भी डाल के देख लो, हमेशा लॉस आएगा. So remember, when the selling price is same, the profit and loss percentage is same, right? Then there is always a loss, and that loss percentage is equal to x square by 100%. Like in this case, how much is the loss? On 320, right? 0, 0 cancel. How much? 1 by 16, which is equal to 6.25. 6.25%. So there is a loss, which is also equal to what? 6.25%. So in such cases, you always have loss. But understand, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, कितना भी इजी ऐसा नहीं पूछेगा ये. तो इस पर 20%, 25%, 20%, 15%, 30% सेलिंग प्राइस सेम रख के परसेंटेज, तो वो परसेंटेज फ्रैक्शन देयर हेल्प्स यू विथ अलोंग विथ रेशियो. ठीक है, अंडरस्टूड? तो याद रखो कि इस केस में हमेशा लॉस होगा अगर ऐसा कुछ केस है. क्योंकि प्रॉफिट है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यू हैव टू डू सेलिंग प्राइस अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर. सेलिंग प्राइस कितना है? 150. मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.25. You took this as 150 and directly multiplied with 1.25. क्वेश्चन इसलिए मैंने चेंज किया था, सेलिंग प्राइस से होना चाहिए. ठीक है, अंडरस्टूड? राइट. ओके, नेक्स्ट इज देखो, एक और होता है कंसेप्ट डिस्काउंट का. राइट, व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट
तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है बताओ, किसी को मालूम है डिस्काउंट? देखो, यू गो टू अ शॉप राइट, कुछ खरीदने के जाते हो कभी खरीदने के लिए, तो जब कोई प्रोडक्ट देखते हो सबसे पहले क्या देखते हो? कलर वलर सब छोड़ो, उसके बाद क्या मेन बात कहाँ होती है? एमआरपी। एमआरपी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो तुम उसको कहते हो कि भैया हम थोड़ी देर में लौट के आते हैं, दुकान कब तक खुली है बता देना। फिर हम लोग जाते ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा कहने का मतलब हम लोग नहीं आने वाले। लेकिन अगर थोड़ा है, तुमको लगता है यहाँ कर सकता है इस पर डील, तो क्या करते हो तुम लोग? मांगोगे उससे, कहोगे भाई सर डिस्काउंट क्या दे रहे हो उस पर? बिना डिस्काउंट के हम लोग बात ही नहीं करते सब जगह। तो डिस्काउंट की बात हमारी पर है कि हाउ मच इज द डिस्काउंट। तो वो कहता है कि डिस्काउंट इज 20%। दी सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच ही इज सेलिंग इट टू यू, राइट? तो देर इज द पॉसिबिलिटी कि मैक्स एमआरपी कैन ऑल्सो बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्या हो सकता है कि वो एमआरपी पे तुमको डिस्काउंट दे, अगर उस पर लेट से 1000 रुपीज है एंड ही सेज दैट कि 20% का डिस्काउंट है, तो ही विल गिव यू 200 रुपीज का डिस्काउंट, मतलब यू हैव टू गिव, ही विल गिव यू द प्रोडक्ट इन हाउ मच प्राइस? 800। तो एक तो हुआ 1000 रुपीज, फिर उसने बेचा 800 का, 800 हुआ सेलिंग प्राइस, फिर उसने वो प्रोडक्ट कहीं से खरीदा भी तो होगा। तो अगर उसने 800 से ज्यादा का खरीदा है तो लॉस है, और 800 से कम का खरीदा है तो प्रॉफिट है। तो वो होता है कॉस्ट प्राइस। अब हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस? एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन, राइट? द क्वेश्चन। बट 3 प्राइसेस आर इन्वॉल्व। एमआरपी को हम लोग यहाँ पर एमपी भी बोलते हैं और एलपी भी बोलते हैं। एमपी इज मार्क प्राइस, एलपी इज लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस, ठीक है? इज दिस क्लियर? बाय बाय। इज दिस क्लियर? देखो, so let us understand this, let us understand this whole thing with an example. You are running a shop, right? कपड़े बनाए का शॉप। एक शर्ट टी शर्ट लेके आते हो 100 रुपीज का, तो मस्त पेंटिंग वेंटिंग मार के तो प्राइस बढ़ा देते हो, राइट? और 150 का स्टिकर चिपका देते हो उस पर, दिस 150 पर मार्क प्राइस। वाई यू डू दिस? बिकॉज यू वॉन्ट समवन टू आस्क यू फॉर डिस्काउंट, यू कैन गिव डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट सुन के खुश हो जाएगा और टी शर्ट ले जाएगा। तो सम पीपल हु डोंट गिव डिस्काउंट, उनका धंधा नहीं चलता है ज़्यादा। तो पहले डिस्काउंट बोल दिया, ऐसे अमेजोन का भी डिस्काउंट आया था, तुमको ही मालूम है कि सेम प्राइस 4 दिन बाद फिर सेम प्राइस मिलता है, लेकिन हम डिस्काउंट के नाम पे हम लोग खरीद लेते हैं, ठीक है? तो व्हेन यू बाय अ शर्ट, लेट्स से कहीं से खरीदा तुमने, मापसा मार्केट से खरीदा, राइट? ये हुआ तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। 150 का स्टिकर लगा दिया, वो मार्क प्राइस। अब कोई कस्टमर आता है, उसको बोलते हो कि डिस्काउंट दे, वो बोलता है डिस्काउंट, तुम कहते ले जा 20% का डिस्काउंट, इज इक्वल टू 30 रुपीज़। मतलब तुमने 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया और सेल कर दिया कितने में? तो दिस इज योर सेलिंग प्राइस। और 100 का बाई किया था, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 20% का। तो even after giving a discount of 20%, you are making a profit of 20%. Even after giving a discount of 20%, you still manage to make a profit of 20%. Why? Because you initially increase the price of the article from 100 to 150. This increase is called markup. Markup. In this case, your markup is equal to 50%. Your markup is equal to 50%. Why 50%?
because we have increased it by 50%, right? So discount is D, profit percentage is stands for P. So there is a relation between mark price and cost price. And what is that relation? $100 plus P upon 100 minus D. This directly gives you a relation between mark price and cost price, and this process called markup. Profit percentage. P is profit percentage, D is discount percentage. जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें मार्क प्राइस ये निकालना था, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। सिर्फ इतना मालूम था कि प्रॉफिट हुआ है 20% का और 20% का डिस्काउंट है, तो दिस विल बी 120 बाय 80, कैंसिल कितना आ जाएगा बेटा, 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। तो ये 1.5 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 1.5 का मतलब क्या है कि वैल्यू गोज अप बाय 50%। और ये रेशियो आता है, यहाँ से क्या पता लगता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस विल बी व्हाट 3। तो अगर कॉस्ट प्राइस 200 है तो मार्क प्राइस विल बी, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस विल बी 150। Understood? The relation between cost price and mark price. Any doubt? Anyone having any doubt? None? ये भी डिफिकल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ इतनी ही चीजें हैं, पूरे के पूरे उसमें है इतना ही चीज, लेकिन उसके क्वेश्चंस जो हैं वो इजी टफ सब आते हैं क्वेश्चंस। So let me give you some questions. Which worksheet I have? एक ये एस ज़्यादा है नहीं वाली, दूसरी वाली देता हूँ। वर्कशीट रखिए थे ना ये वाली, हाँ। ये थोड़ी गलत आ गई उधर से, हूँ ऑनलाइन उनका। This you noted down? Question है, instead of selling the bicycle for ₹2,000, a shopkeeper sold it for 1,500. Find the loss incurred in the transaction. वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 2,000 की जगह उसने कितने का बेच दिया। तो आंसर इज डेटा इन एडवोकेट। वाई? कॉस्ट प्राइस तो मालूम ही नहीं है, तो आंसर इज डेटा इन एडवोकेट। डेटा पता ही नहीं है ना। Second is Swankar was very much excited about an offer from Reebok that read buy things worth 2,000 and get things worth 1,000 absolutely free. How much discount was there in the offer? 50%. Third question. By selling an article for how much? 540. So if the selling price of an article is 540, the profit percentage is 12.5%. In order to double the profit, तो क्या करना है? Profit double करना है, not profit percentage. At what price should the article be sold? 33.33. हाँ, देखो बताता हूँ। वो क्या कह रहा है कि 2,000 का माल खरीदो और 1,000 का फ्री पाओ, राइट? तो तुमको 1,000 का फ्री मिला,
टोटल वर्थ थी 3000, 3000 के कॉस्ट प्राइस पे 1000 का प्रॉफिट हुआ, राइट? तो तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ? 1/3 का, 1/3 33.33%। हाँ करेक्ट, 1/3 33.33। या मतलब 2000 के सामान पे 1000 फ्री मिल रहा है, तो 1000 टोटल 3000 पे। हाँ, तो डिस्काउंट मिला तुम्हें 3000 की चीज पे 1000 का डिस्काउंट मिला। थर्ड क्वेश्चन इज बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 540 अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% इज मेड। देखो प्रॉफिट डबल करना है, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 12.5 कितना होता है, 1/8, राइट? अरे कैलकुलेटर से अच्छा है कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट होता है, राइट? तो कॉस्ट प्राइस इज 8, प्रॉफिट इज 1, प्रॉफिट इज 1 एंड सेलिंग प्राइस इज 9, राइट? रेशियो पे कॉस्ट प्राइस इज 8 और प्रॉफिट ऑफ 1, न्यूमरेटर प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस इज व्हाट, 9। बट ये तो दिया है 540, 9 6 54 0, 8 इंटू 60 कितना हुआ, 480। एंड दिस इज कितने का प्रॉफिट हुआ तुमको अभी पहले केस में, 60 का। 480 का खरीदा कॉस्ट प्राइस, 60 का प्रॉफिट, 540 का। तुम चाहते हो कि तुम्हें 120 का प्रॉफिट करना है, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा 480। सो व्हाट शुड बी योर सेलिंग प्राइस, दिस प्लस दिस शुड बी योर सेलिंग प्राइस और नॉट? हाउ मच इट विल बी? जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस में डाल दो, 600, राइट? वांट टू ट्राई, वांट टू ट्राई क्वेश्चंस टिल 12? चल क्या पूरे ही कर लो, 20 तक, 15 तक, चलो 15 तक करो।